So let's start, everyone. First of all, I welcome you all to the Learn with Linkstar Masterclass by Muneeb. That's me. Topic for today is the secrets of successful digital media planners. I would want you guys to tell me that if I'm audible or not. You are. Perfect. Okay, so the topics that we're going to discuss today, it would be my introduction, how I came at this position. Secondly, how to build your side hustle. That's really important. Do not depend on your only income, which is your salary. Third, I would be discussing about the digital media landscape of Pakistan. Number four, role of performance marketing, audience strategy, channel strategy. Number five, I will be showing my case study, which I did for Bonanza. Number six, frequently asked questions to the media planners. So I've been working as a digital media manager for Alkaram Studio. It's been quite a time now. Previously, I was associated with Group M as a media planner, and I had Coca-Cola in my plate. And I did a major famous campaigns for Coca-Cola, including Coke Studio Season 14. Previously, before that, I was in Bonanza Satrangi as an assistant manager digital media. That was my going and my real job from which I learned my skills, performance marketing. Linkstar is my side hustle. Linkstar really helped me in getting freelancing into the freelancing industry, and I've been doing freelancing since a lot of time now, and I have had major different clients with different campaign goals, with different business goals, different business niches, audiences. So that's where that through Linkstar I really polished my skills. Okay, so I would want you guys to know that you can also build your side hustle like me. I'm not only, alhamdulillah, dependent on my salary, it's my side hustle too. So, first of all, you have to identify your skills and areas of interest. Being a digital media planner doesn't mean that you just have to create campaigns. No, you have to figure out in which aspect you are good at. I would want you to analyze yourself and know that if you're good at lower funnel campaigns, if you are good at upper funnel campaigns, if you are full funnel media planner, that is great. But you should know that where you excel. So you need to know that where your expertise lies. For me, my expertise is performance marketing and lower funnel campaigns. I help small scale brands improve their sales and large scale brands to ultimately get profitability to the company and meet their ultimate goals. Number two is differentiate yourself from others. I'm trying to say here is there are a couple of media planners in this industry, but people have an assumption that यार ये बंदा इतना खास नहीं है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर. क्यों कहते हैं लोग ये बात? लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके काम उसको जस्टिफाई नहीं करता. मेरा काम हमेशा से ये रहा है कि मैं नंबर्स को रीड करना जानता हूँ, मैं नंबर्स को एनालाइज करना जानता हूँ, मैं ग्रोथ दिखाता हूँ. सो यू शुड नो कि आपको एक दूसरे मीडिया प्लानर से किस तरीके से अपने आप को डिफरेंशिएट करना है और किस तरीके से ग्रो करवाना है. नंबर थ्री इज शोकेस योर अचीवमेंट्स. अक्सर मीडिया प्लानर्स करते ये हैं कि काम तो कर लेते हैं, उनके अपने ब्रांड्स को स्केल भी कर लेते हैं, बट डू दे शोकेस इट?
नो दे डोंट। अगर आप अपना काम शोकेस नहीं करेंगे तो कोई भी क्लाइंट या कोई भी ब्रांड आपको अपने बजट के साथ ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर मैं कभी क्लाइंट होता तो मैं कभी भी उस मीडिया प्लानर को हायर नहीं करता जिसने स्पेंड ना किया हुआ हो या मुझे उसके काम का पता ना हो। बिकॉज ट्रस्टिंग अ पर्सन विद योर बजट इज काइंड ऑफ रिस्क। मेरे पास अगर 10 लाख 20 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन का बजट है, आई विल नेवर गो फॉर अ गाय जिसने यार आज तक इतना कोई खास काम नहीं किया हुआ या उसकी केस स्टडीज नहीं हो या उसने शोकेस नहीं किया हुआ अपना काम। सो ऑलवेज शोकेस योर वर्क। अपने काम की केस स्टडीज बनाना सीखें। अपने काम को मैं क्या कहूँगा, अपने काम को दिखाना सीखें कि किस तरीके से आपने सक्सेस की है अपने ब्रांड को लेके। और कम्युनिकेशन इज द की। नंबर 4 इज कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन में क्लाइंट्स के साथ टॉप ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में बात किया करें। सही है, फेसबुक पे एड्स चलाना, गूगल पे एड्स चलाना, नॉट अ बिग डील। आजकल हर बंदा फेसबुक पे एड्स चला लेता है, गूगल पे एड्स चला लेता है। क्या वो कम्युनिकेट कर पाता है? क्या वो उसको अपनी कैंपेन्स को जस्टिफाई कर पाता है? क्या वो एक्चुअली उन लर्निंग्स को जस्टिफाई कर पाता है, क्लाइंट से कम्युनिकेट कर पाता है, क्लाइंट्स को बता पाता है कि यार ये क्यों हो रहा है? आई डोंट थिंक सो मैनी पीपल डू। दे जस्ट रीड द डैशबोर्ड एंड टेल क्लाइंट यार आपका सीटीआर ये आ रहा है, आपका सीपीएम ये आ रहा है। क्यों आ रहा है वो नहीं पता लोगों को। सो कम्युनिकेशन इज द की। क्लाइंट्स से कम्युनिकेट करें, वर्कशॉप्स अटेंड करें एंड ऑलवेज बी प्रेजेंट बिकॉज मीडिया लैंडस्केप पाकिस्तान का बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द डिजिटल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, you can see 2019 से लेके 2022 तक there's a massive growth in numbers. 194 million mobile connection users हैं हमारे पास, so that's a huge number. 26% growth since 2019. हमारे पास 4G के जो users हैं that's 121 million, और web users जो हैं हमारे पास वो 124 million है। So 70% growth, 77% growth since 2019. क्यों आई इतनी ज्यादा ग्रोथ? क्योंकि कोविड आउटब्रेक हुआ था पूरी दुनिया के अंदर, पीपल वर होम अरेस्टेड एंड सब मोबाइल इस्तेमाल करना स्टार्ट सबने कर दिया था, इंटरनेट का यूसेज स्टार्ट कर दिया था। सो द एबनॉर्मल ग्रोथ यू आर सीइंग इज बिकॉज ऑफ द कोविड। कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था यहाँ पे। नाउ सी द प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक आज 48 मिलियन की पाकिस्तान की ऑडियंस उसने ली हुई है अपने पास। YouTube being the largest platform in the digital industry with a 71.8 million of audience. 14 million हमारे पास Instagram पे, 19 million Snapchat पे, 6 million Twitter पे, 25 million TikTok पे। TikTok in 2019 was at 11 million. See the growth. Now it's at 25 million और ये आगे बढ़ता जा रहा है नंबर। सो एफिशिएंटली अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, प्लेटफॉर्म्स को जज करना। अब ये 6 मिलियन 19 मिलियन 14 मिलियन सही है, दीज आर नंबर्स फॉर अस, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, हम अपनी ऑडियंस को कहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे अपने ब्रांड के एड्स के साथ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल आरओआईज। बीइंग अ डिजिटल मीडिया प्लानर, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि कौन से मेट्रिक्स हैं और कौन से एसेट्स पे कौन से रिजल्ट्स आपने गेज करने हैं। सो फेसबुक, ये स्टैंडर्ड मेट्रिक्स हैं, एक इंडस्ट्री बेंचमार्क है ये मीडिया का पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से। तो फेसबुक वीडियो एसेट की अगर मैं बात करूं तो ये हम लोग सीपीवी पे जज करते हैं। सीपीवी इसका $0.01 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीपीवी थ्रू होना चाहिए $0.02। वीसीआर आपका 10 सेकेंडर एसेट पे 40 to 50% होना चाहिए। आई होप एवरीवन नोज के बेसिक मैट्रिक्स क्या स्टैंड करते हैं एंड इनके एब्रिविएशंस क्या हैं। 30 सेकेंडर एसेट का आपका 10 to 15% का कंप्लीशन रेट होना चाहिए, 60 सेकेंडर का 1.5% से 3%। फेसबुक का जो व्यू काउंट होता है वो 3 सेकंड पे होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी अगर वीडियो 3 सेकंड तक देख ली तो वो व्यू काउंट होता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वीडियो कंप्लीशन रेट की, कि कितने लोगों ने कितने सेकंड्स तक कितने परसेंट ऑफ द वीडियो कंप्लीट की। एवरेज वीडियो 10 सेकंड का 40% होना चाहिए, 30 सेकंड का 20%, 60 सेकंड का 10%। इंगेजमेंट रेट की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12% आपका इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव पे आपका इंगेजमेंट रेट होना चाहिए, और रीच ऑब्जेक्टिव पे आपका 2 to 4% होना चाहिए। एंड सीपीएम दैट शुडंट बी ऑफ मोर देन $0.35। यहाँ पे मैं ब्रॉड ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, नीश ऑडियंस की बात नहीं कर रहा। सो कंसिडर दैट मेट्रिक्स फॉर द ब्रॉड ऑडियंस।
अगेन फेसबुक स्टैटिक एसेट्स पे आपके ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव पे 8 to 10% अगेन, एंड रीच ऑब्जेक्टिव पे 2% to 4%। यहाँ पे हम स्टैटिक पे CTRs देखते हैं, 1.5 से 2% का CTR इज अ गुड CTR, एंड CPC आपका 0.1 से $0.05 के इन बिटवीन होना चाहिए, विद अ CPM ऑफ 0.8 से $1.5। नाउ स्विचिंग द प्लेटफॉर्म एंड कमिंग टू यूट्यूब। यूट्यूब का प्री रोल $0.02 से ज़्यादा उसका CPV नहीं आना चाहिए, एंड उसका वीडियो कंप्लीशन रेट 10 सेकेंड एसिड में 60% होना चाहिए। सो उसका VTR 20% से 25% होना चाहिए, एंड अगेन द लिस्ट गोज ऑन। हर एड प्लेसमेंट का, हर एड फॉर्मेट का एक अलग मेट्रिक है जिसपे हम जज करते हैं। हर एड फॉर्मेट को हम एक मेट्रिक से जज नहीं कर सकते। सो दैट इज द बेसिक थिंग एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट क्या करना है। अगर आपका क्लाइंट आपको बोले यार मुझे वीडियो एसेट्स पे CTR जज करना है, दैट इज अ मेट्रिक बट दैट इज नॉट फॉर द वीडियो एसेट्स। सो यू शुड नो कि आपको कौन सा एसेट कब इस्तेमाल करना है, कौन सा एड फॉर्मेट कब किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। So that is really important. Okay, so moreover, you need to understand the role of platforms to reach the target audience. YouTube आपका क्या रोल होता है? YouTube is the masses. आपको लैंडस्केप में मैंने बताया 71.8 मिलियन की ऑडियंस है, सो इट इज अ मास प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप अपने ब्रांड के लिए रीच ड्राइव कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप एंगेजमेंट ड्राइवर है। ये डिस्प्ले जो नेटवर्क है आपका जो गूगल पे है वो अवेयरनेस एंड रीच ड्राइव करता है, एंड ASO एंड सर्च आपका कंसिडरेशन ड्राइव करता है, बिकॉज इसमें हायर इंटेंट होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग के लोग कहते हैं कन्वर्जन कैंपेन्स में सोशल मीडिया पे चला देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया एक बंदा अगर इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है तो वो बाइंग माइंडसेट से इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने मी टाइम में इस्तेमाल करता है, और वहाँ हम उसे इंटरसेप्ट करते हैं अपने एड्स के साथ। सो अगर मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो दैट इज माई मी टाइम। मैं अपने मीम्स देखने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कंटेंट देखने के लिए, एंड जो दुनिया में चल रहा है उससे कैचअप करने के लिए फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग फेसबुक टू बाय थिंग्स, बट वी डू रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टा एंड वी सी अ गुड कन्वर्जन रेट, बिकॉज हमारी वो ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज इस तरीके की होती हैं। वी गो फॉर द कन्वर्जन ऑडियंसेस, और उसकी मैं आगे बात करता हूँ। ओके, सो ये ऑडियंसेस हैं, 3 तरीके की ऑडियंसेस होती हैं, कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंसेस एंड लुकलाइक ऑडियंसेस। कोर ऑडियंसेस आपकी क्या होती हैं? कोर ऑडियंसेस ये होती हैं कि आप विदाउट एनी यूज विदाउट यूजिंग फर्स्ट पार्टी डेटा आप कोई ऑडियंसेस बनाएं। जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म की अपनी ऑडियंसेस होती हैं वो होती हैं कोर ऑडियंसेस। और डेमोग्राफिक्स से आप टारगेटिंग कर सकते हैं, लोकेशन से कर सकते हैं, इंटरेस्ट से कर सकते हैं, बिहेवियर से कर सकते हैं, और कनेक्शन एंड डिवाइस से कर सकते हैं आप इस कोर ऑडियंसेस की टारगेटिंग। कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं? कस्टम ऑडियंसेस वो होती हैं जो आपके एड्स के थ्रू चल के आपके पास आई हैं। फॉर एग्जाम्पल, और प्लस आपका जो अपना डेटा है फर्स्ट पार्टी उससे आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ई-कॉमर्स ब्रांड की बात करूं तो कितने लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, उनकी ईमेल एड्रेसेस है मेरे पास और फोन नंबर्स है मेरे पास। आई कैन अपलोड देम ऑन द फेसबुक एंड आई कैन क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस फॉर माई रीटारगेटिंग पूल। सो वेबसाइट, ऐप एक्टिविटी, फेसबुक एंगेजमेंट्स, ये सारी जिन्होंने मेरे एड्स के साथ, जिन्होंने मेरे ब्रांड के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, मैं उन्हें रिटारगेट करूंगा। दैट इज माय कस्टम ऑडियंसेस। लुकलाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं? लुकलाइक ऑडियंसेस आई कैन क्रिएट विद माय कस्टम ऑडियंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लुकलाइक ऑडियंसेस बनानी है कि एक्स नंबर ऑफ पीपल हैव बॉट फ्रॉम माय ब्रांड एंड मुझे ऐसे और बहुत सारे लोग चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज मैं अपने ब्रांड की कस्टम ऑडियंस की लिस्ट अपलोड करूंगा, फेसबुक को दूंगा, एंड फेसबुक के थ्रू उसकी 1%, 2%, 3% की लोकलाइक ऑडियंसेस बनाऊंगा। फेसबुक विल हेल्प मी फाइंड रेलेवेंट पीपल एंड दोज पीपल जिनकी इंटरेस्ट एंड जिनका इंटरनेट यूजेज पैटर्न, बाइंग पैटर्न उस ऑडियंस से मिलता हो जिन्होंने ऑलरेडी मेरा ब्रांड खरीदा हुआ हो। सो दीज आर द 3 ऑडियंसेस यू शुड नो, और इन्हीं ऑडियंसेस के अराउंड हमारा मीडिया ऑप्टिमाइज होता है। सो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। I'll make you understand this picture. अब आप ये कौन एक बना हुआ है? लेफ्ट साइड पे ब्रांडिंग, which means awareness of your brand. Right side, and that requires more volume. Right side पे more value driven है, that is performance marketing. हम अगर awareness campaigns चलाते हैं, हम awareness campaigns पे जो मीडिया बाय करते हैं अपने, वो हम CPM पे करते हैं। We buy impressions. We do not buy the CPA, cost per action या cost per lead. We buy impressions because we want to reach many people. इसी तरीके से अगर हमारा कोई वीडियो कैंपेन है तो वी ऑप्टिमाइज द कैंपेन्स, वी बाय अ मीडिया ऑन CPV कि एक व्यू मुझे इतने का पड़ रहा है।
अगर हम मिड फनल की बात करें तो हम ट्रैफिक कैंपेन्स चलाते हैं, द मिडिल सीपीसी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक कैंपेन्स के अंदर कंसिडरेशन के अंदर सीपीसी को टारगेट करते हैं, हम लोग यहाँ पे मीडिया बाय करते हैं कॉस्ट पर क्लिक पे। गोइंग टू द लोअर फनल कैंपेन्स, हम यहाँ पे दो तरीके की लोअर फनल्स होती हैं, एक हम लोग कन्वर्जन कैंपेन्स चलाते हैं, एक हम लोग लीड जेन चलाते हैं। सो सीपीएल एंड सीपीए पे हम अपनी मीडिया बाइंग कर रहे होते हैं। सो दिस इज द पेड सोशल मीडिया, पेड सोशल परफॉर्मेंस मेट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे हर ऑब्जेक्टिव के मैंने मेट्रिक्स लिखे हुए हैं। यू विल नो के अवेयरनेस के अंदर गुड आपके मेट्रिक्स क्या होते हैं, impressions, views, amazing, good metrics. What you can focus on is reach. That is a better metric for awareness. But what are the best metrics for awareness? आप awareness किस तरीके से जज करते हैं अपने ब्रांड की? ब्रांड हेल्थ ट्रैकर आपके पास होना चाहिए, ब्रांड इफेक्ट स्टडी एंड ब्रांड लिफ्ट स्टडी आप क्रिएट करें अपने ब्रांड के लिए, एंड क्रिएटिव प्री टेस्ट। सो दीज आर द बेस्ट metrics to look on for awareness campaigns. Similarly goes for what goes for consideration is, अगर आपने अच्छे मैट्रिक्स देखे हैं, दैट इज एंगेजमेंट रेट एंड व्यू रेट। आपको पता चल जाएगा कि यार आपका ब्रांड कितने लोग कंसिडर कर रहे हैं। बट व्हाट आर द बेटर मैट्रिक्स? रीच अगेन एंड वीडियो कंप्लीशन रेट, कितने लोगों ने आपकी वीडियो एंड तक देखी है, कितने परसेंट कंप्लीट किया आपकी वीडियो। और बेस्ट मैट्रिक्स क्या है कि सेल्स लिफ्ट कितना है, ब्रांड इफेक्ट स्टडी अगेन एंड क्रिएटिव प्री टेस्ट। ये इनके जो टूल्स हैं वो नीलसन करता है आपकी स्टडी, डेटा लॉजिक से आपके पास टूल्स। सो या दीज टूल्स डू योर स्टडीज। कन्वर्जन कैंपेन्स के अंदर क्या होता है? कन्वर्जन कैंपेन्स में गुड मेट्रिक्स आपकी यूनिक रीच कितनी आ गई, आपके पास क्लिक्स कितने आ गए। बट बेटर मेट्रिक्स क्या है? सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है आपके एड्स पे, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी है आपके ब्रांड की। अगेन द बेस्ट मेट्रिक्स आर रोआस कितना आ रहा है, रोआस इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ₹1 लगा रहे हैं आप मीडिया के ऊपर तो आपको कितने रुपए का रिटर्न मिल रहा है। आरओआई मॉडलिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मॉडलिंग। साइट कन्वर्जन्स कितनी आ रही हैं आपके पास। सो दोज आर द बेस्ट मेट्रिक्स फॉर कन्वर्जन कैंपेन्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, माय कंटेंट फॉर टुडे इज रोल ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्या ब्रांड्स क्या रोल है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक ब्रांड को लेके, एंड ऑडियंस स्ट्रेटजी क्या होती है और चैनल स्ट्रेटजी क्या होती है। ओके, सो आजकल काफी लोग बात करते हैं कि डेटा ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। सो डेटा ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी तीन चीजों का मिक्सचर है: प्रिसिशन मार्केटिंग, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। व्हाट इज प्रिसिशन मार्केटिंग? एक्टिवेटिंग मल्टीपल टारगेटेड सेगमेंट्स एट स्केल, इंक्रीजिंग रेलेवेंसी एंड रीच। आप रेलेवेंट लोगों को, मासेस रेलेवेंट लोगों को टारगेट करें। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग क्या होती है? पर्सनलाइज एड्रेस टू एन आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को नाम के साथ उसका क्रिएटिव चला के मैसेज करूं, या उसको अलग से उसको फील कराऊं दैट दिस एड इज ओनली फॉर यू, दैट इज पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स ड्रिवन मार्केटिंग, डायरेक्टली मेजर एंड ऑप्टिमाइज्ड अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स, often e-commerce or data capture. So that is the whole data driven marketing structure. प्रिसिशन वर्सेस परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, प्रिसिशन मार्केटिंग में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अवेयरनेस। मेन केपीआई क्या होता है? सीपीएम। आप सीपीएम अपना कम करने की कोशिश करते हो। परफॉर्म मिडिल और लोअर फनल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ जाती है। ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे दो होते हैं, मिडिल फनल में आपका एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव होता है एंड लोअर फनल में आपका कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव होता है। मेन केपीआई अगेन मिडिल फनल की सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है आपका, एंड मेन केपीआई आपका कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है। So these are main objectives of the entire funnel. I'm pretty sure सबने ये experience किया होगा कि Google पे आप कुछ भी लिखते हैं and you go back to your Facebook or Instagram and you start getting bombarded with the ads, relevant ads. आप बोलते हैं यार मैंने अभी Google किया, मेरे पास ads आना start हो गए। How do these work? Cookies and pixels and internet behavior. आपका internet behavior पूरा map किया जाता है। तो अब कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ट्रैवल ब्रांड है, तो ट्रैवल ब्रांड ने अपने इंटरेस्ट के अंदर, ऑडियंसेस के अंदर डाला हुआ होगा कि पीपल हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर ट्रैवलिंग सर्विसेज या एक्टिविटीज। तो अल्टीमेटली वो फॉरन फेसबुक आपको ऐड ये दिखाएगा बिकॉज यू आर मोर इंटरेस्टेड, यू आर एन इन मार्केट ऑडियंस। सो दैट इज प्रीटी कूल। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इन प्रैक्टिस, ऑडियंस बिल्डिंग, टारगेटिंग अ बेस ऑफ इंटरेस्टेड सेगमेंट्स। चैनल, कौन सा चैनल आपने यूज करना है? फोकस ऑन द परफॉर्मिंग मीडिया चैनल्स इन क्रिएटिव एंड मैसेजिंग, क्रिएट टारगेटेड क्रिएटिव मैसेजिंग टू एड्रेस ऑडियंसेस नीड्स। जहां आपने ऑडियंस की नीड को फुलफिल कर दिया, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस कैंपेन सक्सेसफुल हो गई।
So what is the objective? Increase in desired and outcome, increase in desired action, objective, clicks, purchases कितने आ रहे हैं आपके पास। अब मैं मीडिया फनल सिमुलेशन की बात करूं, सो अपर फनल के अंदर अब आप ये देखें, अपर फनल के अंदर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस हिट कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे CTR बहुत कम है। ये एक जेनेरिक फनल के मैट्रिक्स होते हैं कि हर फनल पे आपको क्या नंबर्स आ रहे होंगे, और आप कंपेयर कर सकते हैं कि अपर फनल, मिड फनल, लो फनल में क्या डिफरेंस है। इंप्रेशन आ रहे हैं आपके मैक्सिमम अपर फनल में, और CTR आपका कम है, CPM आपका यहाँ पे कम है, और कन्वर्जन रेट आपका बहुत ज़्यादा कम है, एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू आपकी इतनी है, एंड नंबर ऑफ शॉपर्स यू हैव 0। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस हियर, सो दैट इज वाई आपके परचेजर्स नहीं है यहाँ पे। मिड के अंदर अगर आप बात करते हैं, तो मिड के अंदर मैंने इंप्रेशंस कितने सर्व किए? 20,000 इंप्रेशन सर्व किए यहाँ पे रिटारगेटिंग के थ्रू। CTR मेरा यहाँ पे बढ़ गया 1% रेलिवेंट। अब मुझे 1 मिलियन इंप्रेशन सर्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने 20,000 इंप्रेशन सर्व कर दिए। CPM मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया बिकॉज मेरी ऑडियंस कम हो गई। कन्वर्जन रेट यहाँ पे मेरा 0.01% से जंप करके 3.2% पे आ गया। ASP मेरी अगेन सेम रही, और मेरी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू $32.58 हो गई। एंड मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए? 6 ऑर्डर्स। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब मैं बात करता हूँ बिल्कुल लोअर फनल पे, मैंने कितने इंप्रेशन हिट किए? 10,000। मेरा CTR बढ़ गया, 1.3% हो गया, और मेरा CPM और ज्यादा बढ़ गया। नाउ लोअर फनल पे मैं CPM मेरा KPI है ही नहीं, मेरा KPI है मुझे अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने हैं एंड अपना कन्वर्जन रेट बढ़ाना है। मेरा कन्वर्जन रेट यहाँ पे 3.2% से 16% हो गया, एंड मेरा GMV बढ़ गया यहाँ पे, एंड मेरे पास 21 ऑर्डर्स प्लेस हुए। सो नाउ यू नो कि किस तरीके से लोअर फनल मार्केटिंग काम करती है। Why must we invest in the middle funnel? अब अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊँ, अब मैं यहाँ बोलूँ कि यार हमें अपर फनल तो करने की जरूरत ही नहीं है, हम मिड और लोअर फनल पे भी डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। Yes, you can hit directly on the lower funnel, but आपके पास रीटारगेटिंग की ऑडियंसेस नहीं होंगी। So there is the reason you should invest in the middle funnel। यहाँ पे आपके पास जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जितनी ज्यादा एंगेजमेंट आएगी, उसमें से आप अपनी ऑडियंसेस फिल्टर आउट कर सकते हैं टू टारगेट इन द लोअर फनल कैंपेन्स। बिल्ड अ बिगर ऑडियंस पूल टू लोअर मीडिया कॉस्ट। अगर आपने जितने ज्यादा अब पैसे अपर फनल में लगाए हुए हैं, उतनी ही आपके पास रीटारगेटिंग पूल बहुत ज्यादा जमा हुआ है, जिसको आप लोअर फनल से रिटारगेट करके कन्वर्ट करेंगे। इफ द लोअर फनल ऑडियंस पूल इज टू स्मॉल, द कॉस्ट ऑफ मीडिया विल बी हायर, ऑब्वियसली आपकी CPM एंड CPC बढ़ता जाएगा। जनरेट हायर मीडिया रेवेन्यू विद अ बिगर बेस ऑफ लॉयल इंटरेस्टेड ऑडियंस पूल। सो दैट्स द लोअर फनल। नाउ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ऑडियंस स्ट्रैटेजी क्या होती है? सो दिस इज अ लिटिल ऑडियंस टारगेटिंग गाइड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो मैं अवेयरनेस के अंदर प्रिसिशन मार्केटिंग ब्रॉड सेगमेंट्स पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपना पूल बनाना स्टार्ट करूँगा अपनी अवेयर ऑडियंस का। कंसिडरेशन के अंदर अगर मैं आऊँगा, तो कंसिडरेशन के अंदर मैं किनको टारगेट कर सकता हूँ कि पेड मीडिया फास्ट एंगेजर कौन है, शॉपलिस्ट ऑडियंस कौन है मेरी, जिसने मेरा शॉप किया हुआ है, ई-कॉमर्स ऐप या ब्रॉड ऑडियंस इन अ सेंस कि मेरे पास कौन कौन से मेरी ऐप पे गए, कौन कौन मेरी वेबसाइट पे गए, एंड आई स्टार्ट creating my audiences pool and retarget them through consideration campaigns। उसके बाद अगर मैं लोअर फनल की बात करूं, तो लोअर फनल पे मैं अपनी ऑडियंस को किस तरीके से कर सकता हूँ? प्रोडक्ट व्यूज एंड ऐड टू कार्ट एंड परचेज। मेरी ऑडियंस यहाँ पे डेवलप होती रहती है। परचेजर ऑडियंस को मैं अपनी अपर वाली ऑडियंस से एक्सक्लूड करके क्रॉस सेल कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को। So this is the audience segment guide I recommend to my team and my people। यहाँ पे ऑडियंस आपकी साइजेबल होनी चाहिए। साइजेबल मीन्स इनफ टू लाइक गेट सर्व्ड। साइजेबल ऑडियंस अगर आपकी नहीं होगी, तो आपका रिजल्ट बहुत महंगे आपको एड्स पड़ेंगे, एंड आपका CPM बहुत ज्यादा शूट करेगा। एड्रेसेबल होनी चाहिए आपकी ऑडियंस। डू वी हैव डेटा और वी कैन गेट इट बाय सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी पार्टनर्स। एड्रेसेबल होगी आपकी ऑडियंस, तो ही आप उन्हें एड्रेस कर पाओगे। मेजरेबल होनी चाहिए आपकी ऑडियंस एंड एक्शनेबल होनी चाहिए आपकी ऑडियंस। इतनी रेलेवेंट होनी चाहिए कि आपका एड्स देख के वो इररेलेवेंट फील ना करे। So this is the four I would say segments I believe in कि ऑडियंस इस तरीके की होनी चाहिए। उसके बाद अब आप काफी सारी एक ब्रांड को एक कैंपेन नहीं चलाता एक टाइम पे, बहुत सारी कैंपेन आपकी चल रही होती है। सो व्हाट डू यू आई रेकमेंड कि आप ऑडियंस डुप्लीकेशन हटाना स्टार्ट करें। देयर इज अ टूल, फेसबुक ऑडियंस ओवरलैप टूल, फ्रॉम विच यू कैन सी कि आपकी ऑडियंस दो कैंपेन में अगर ओवरलैप कर रही है, तो आपका जो एड की एफिशिएंसी है, वो आपकी कैंपेन की एफिशिएंसी वो ड्रॉप होना स्टार्ट होती है।
सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके जो कैंपेन्स हैं वो एफिशिएंट हो और आपकी ऑडियंस डुप्लीकेट ना कर रही हो. So you have to start using exclusions. अगर आपकी audience overlap less than 20% है, that is good enough. You need to take no action but monitor the performance. But if you have a high audience duplication which is greater than 20% in the two audiences, you have to start using exclusions in your campaigns to make it more efficient and more better. Lower funnel audience duplication. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मैंने अपनी कैंपेन 3 तरीके से ऑप्टिमाइज की हुई है, एक परचेज पे, एक ऐड टू कार्ट पे, एक प्रोडक्ट व्यूज पे. आई वुड से कि मैं अपने ऐड टू कार्ट में वो ऑडियंसेस शो करूंगा जिन्होंने प्रोडक्ट व्यूज किए हुए, एंड परचेज के अंदर से वो ऑडियंस चूज करूंगा जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है. सो मैं 3 अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू उन्हें 3 एड्स दिखाऊंगा, तो मेरी 3 की फ्रीक्वेंसी पे वो कन्वर्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी प्रोडक्ट व्यू की ऑडियंस 100K है तो ऐड टू कार्ट की 10K है, एंड परचेज की ऑडियंस 3K है. सो आई स्टार्ट एक्सक्लूडिंग दीज ऑडियंसेस फ्रॉम द अपर कैंपेन्स. ऑडियंस स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो की कंसिडरेशंस अभी तक क्या है. इन्वेस्ट इन द मिड फनल ऑडियंसेस टू बिल्ड लोअर फनल ऑडियंसेस which has a higher conversion rate is equal to sales. Crucial to do deduplication of audiences when setting up ads to prevent media wastage and poor customer experience. मुझे बिल्कुल भी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एक ब्रांड से मैंने परचेज कर लिया एक ऐड देख के and I'm getting bombarded with those ads again, सो आई फील दैट दोज आर इररेलेवेंट, और मैं उस वक्त तक वो नहीं खरीदूंगा जब तक मुझे उस ब्रांड, अगर मैं ब्रांड लॉयल हूँ तो जब तक मुझे वो साइकिल नहीं आएगा परचेज का, मैं नहीं खरीदूंगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट हेयर केयर ब्रांड या मैं ब्यूटी ब्रांड की बात करूंगा, तो आइडियली मुझे पता होना चाहिए कि यार मेरा प्रोडक्ट कितने दिन में कंज्यूम हो जाएगा कस्टमर के पास. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शैम्पू खरीद रहा हूँ ऑनलाइन हर्बल केयर का, मुझे पता है कि अगर 15 डेज में वो मेरी शैम्पू की बॉटल एंड हो रही है, तो मैं उसको 13th डे पे ऐड दिखाना अपना वापस से स्टार्ट करूंगा, रीटारगेट करूंगा, बिकॉज मुझे पता है उसके कंजम्पशन वो दोबारा बाय करेगा. सो आई हैव टू बी देयर जब उसकी बाइंग वो कर रहा हो अपने लिए. कस्टमाइज योर क्रिएटिव प्लस प्रोमो प्लस प्रोडक्ट कैटलॉग फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट. अब हम बात करते हैं चैनल स्ट्रैटेजी की. कैंपेन मीडिया गाइड, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से चैनल और कितना बजट आप अपने उसके अंदर लगाएंगे. ये मैं एक स्मॉल स्केल ब्रांड के लिए मैंने बनाया है. दिस इज नॉट फॉर मासेस, दिस इज नॉट फॉर ब्रांड्स लाइक कोका कोला, पेप्सी, यूनिलीवर. दिस इज नॉट फॉर देम. दिस इज फॉर अ स्मॉल स्केल ब्रांड जिनके बजट्स बहुत कम होते हैं एंड दे वांट टू स्पेंड ऑन मीडिया एंड गेट सेल्स अल्टीमेटली. सो yes, it is important. आप अपना 15% बजट अवेयरनेस पे रखें, 25% कंसिडरेशन पे रखें, एंड 60% बजट अपना आप परचेज पे रखें, कन्वर्जन कैंपेन्स पे रखें. सो यू कैन इजीली ड्राइव सेल्स थ्रू दिस फॉर्मूला. Channel strategy की key considerations क्या हैं? Invest across the funnel in order to build a sizable lower funnel audience across teaser to D-day, that is a doomsday exact day sale जब आपकी campaign launch है उस दिन. Invest in high performing media channels based on the priority, social, display, video. Remember to customize your creative and messaging. That is really important. आपके creatives अगर customized या personalized नहीं होंगे तो आपके ads irrelevant होना start हो जाएंगे audience को. These are the metrics. I believe यहाँ पे काफी सारों को पता भी होंगे, बट ये आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए. CPM everyone knows. मैं इन ई कॉम मीडिया की बात करूँगा. एक्सप्लेनेशन ड्रॉप ऑफ परसेंटेज एक परफॉर्मेंस मार्केटर को पता होना चाहिए कि यार मेरे लोग, कितने लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक किया एंड कितने लोग मेरी वेबसाइट पर आए. यहाँ पे एक गैप होता है. अगर मेरे लोगों ने ऐड पे लोगों ने 1000 क्लिक्स किए तो मेरी वेबसाइट पे सिर्फ 600 लोग आ रहे हैं, तो मेरा 40% का मेरा ड्रॉप ऑफ रेट है. यू ट्राई टू रिड्यूस दैट. हाउ डू यू रिड्यूस दैट? बाय ऑप्टिमाइजिंग योर कैंपेन्स. कॉस्ट पर विजिट मेरे लैंडिंग पेज की क्या आ रही है विजिट्स, यहाँ पे आगे मैंने फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं. ये आपको आपके इन प्लेटफॉर्म जो आपकी रिपोर्टिंग हो रही होती है उसके अंदर भी आपको ये रिजल्ट्स आते हैं. सो यू शुड नो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ कब लग रहा है और कौन सा मेट्रिक आपने कब देखना है. ऐड टू कार्ट कन्वर्जन के कितने ऐड टू कार्ट्स हो रहे हैं. अगर मैं बात करूं कि अगर जिन ब्रांड्स में मैंने काम किया है कि अराउंड मेरे पास 1500-2000 ऐड टू कार्ट्स आते हैं, लेकिन मेरे पास जो एक्चुअल कन्वर्जन आती हैं वहाँ पे सिर्फ 100-150 दिखा रहे होते हैं. सो दैट इज द गैप. ये 1500-2000 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है मेरा प्रोडक्ट, बट एक्चुअली 100 ने परचेज किया है. नाउ द रोल इज कि मैं उनको किस तरीके से वापस अपने फनल के अंदर लेकर आऊँ, वापस उन्हें कन्वर्ट करवाऊँ. आई कैन ऑफर certain discounts, I can offer free deliveries for them. I can actually retarget them. Okay, you have left something in your cart and you should now purchase those.
अगर मेरा वो भी नहीं हो रहा तो मैं देखता हूँ कि मेरा ड्रॉप ऑफ क्यों आ रहा है, मैं अपनी जर्नी, यूजर जर्नी दोबारा स्टडी करता हूँ। सो वहाँ पर मुझे पता चलता है मेरी वेबसाइट का चेकआउट का कोई मसला है, सारी चीज़ें। यू एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड यू डू अ 360 और डीप, यू गो इनटू अ 360 एनालिसिस एंड सी के वेयर द प्रॉब्लम लाइज। कन्वर्जन रेट आपका, टोटल आइटम सोल्ड अपॉन टोटल विजिट्स रिपोर्टेड। डायरेक्ट एएसपी आपका होता है डायरेक्ट जीएमए जनरेटेड बाय मीडिया अपॉन टोटल आइटम्स आर सोल्ड। अच्छा, अगेन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट जीएमवी, टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मीडिया, direct GME is generated by total media by media upon total mega campaign GME campaign wise है। Direct ROAS क्या, direct sales generated by media campaign upon total media budget utilized। Total ROAS क्या, total campaign sales generated upon total media budget utilized। यहाँ पे लोग total ROAS ज़्यादा कोट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, बाकी मेट्रिक्स भी कोट करना स्टार्ट करें। यू कैन एक्चुअली मेक अ स्कोर कार्ड के वीकली आप ये सारे मेट्रिक्स रिपोर्ट करना स्टार्ट करें एंड हर फनल पे बताएं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं उनको टैप इन करने के लिए। So there's this work of mine, it's called a success story of Banana Satrangi to bring an omni-channel framework to life। यहाँ पे इस केस स्टडी को बताने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें, ये एक उस ब्रांड के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिसका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है एंड फिजिकल स्टोर भी है। बनाना सतरंगी इज अ लेगेसी ब्रांड और masses आर अवेयर ऑफ दैट, वुमेन शॉप फ्रॉम दोज। लेकिन यहाँ पे जो मैं चैलेंज फेस कर रहा था, मैं चैलेंज ये फेस कर रहा था यहाँ पे कि मेन शलवार कमीज, मेरा यहाँ पे वुमेन क्लोथिंग दे सेल लाइक हॉट केक्स, फैशन अपैरल इंडस्ट्री, ई कॉमर्स की बहुत क्रेजी है, बट मेरा मेन शलवार कमीज, आई वाज स्ट्रगलिंग सेल्स विद दैट। यार मेरा लोग ऐड तो देख रहे हैं, मेरा सीपीएम भी बहुत अच्छा आ रहा है, बट मेरा कन्वर्जन रेट नहीं आता मेन की कैंपेन पे। सिमिलरली अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो मेरा बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट आ रहा है। मेरे प्रोडक्ट्स बनाना इज नोन फॉर मेन प्रोडक्ट्स, स्वेटर्स हो गए, शलवार कमीज हो गया, लेकिन वो सेल्स नहीं आती थी। तो ये ऑडियंस जाती कहाँ थी मेरी? What I did was I implemented offline conversion API। मैंने स्टोर्स पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे अपना पीओएस पे जब वो बाय करते हैं चीज़ें, तो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर यूजुअली लिख पाते हैं। आई स्टार्टेड गैदरिंग डेटा फ्रॉम द स्टोर्स। नाउ यूजिंग दिस ऑफलाइन कन्वर्जन एपीआई, मैंने ये डेटा फेसबुक को देना स्टार्ट किया। मैं डेली, और मैंने स्टार्ट में तो डेली इसको फेच करना, फीड करना स्टार्ट किया डेटा को। सारे स्टोर से पाकिस्तान के मैंने डेटा मंगवाता था डेली एंड मैं डेली अपलोड करता था एंड देखता था। अब वो करता क्या था फेसबुक, कि मेरी कैंपेन के अगेंस्ट मेरी ऑफलाइन कन्वर्जन दिखाता था, विच मीन्स कि अगर किसी बंदे ने मेरा एड ऑनलाइन देखा है और उसने जाके स्टोर से चीज परचेज की है, तो मेरी कैंपेन के अगेंस्ट वो स्टोर कैंपेन के अगेंस्ट वो परचेज रिकॉर्ड हो जाती थी एज एन ऑफलाइन कन्वर्जन। सो मेरी यहाँ पे लर्निंग क्या थी? मेरी लर्निंग यहाँ पे ये थी कि यार मेन आर मोर आउटगोइंग। मैन यहाँ पे बहुत इजीली, पाकिस्तानी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, मर्दों का ये होता है यार कौन ऑनलाइन ऑर्डर करे, ई कॉमर्स का वेट करे 5-6 दिन डिलीवरी, उन्होंने वेबसाइट देखी, ऐड देखा, वो जाके स्टोर से जाके उनके लिए कन्वीनियंट है, जाके खरीद लिया। सो मेरी कैंपेन जो थी ना ऑफलाइन पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती थी, विच मीन्स के लोग सारे एड्स मेरे देखते थे और ऑफलाइन जाके कन्वर्ट होते थे, दूसरे चैनल पे, ई कॉम पे कन्वर्ट नहीं होते थे वो। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने अपना बजट और इंक्रीज किया मेन कैंपेन्स के ऊपर ताकि मेरे स्टोर पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो। सो यू कैन सी इट, आई सॉ 2.5x increase in transaction attributed to Meta। So this is an official case study published by Facebook on my work। So this is the first brand which implemented omni-channel advertising by integrating retail store sales data to test the impact of their online Meta advertising। तो हम लोग तो ये सोचते थे कि यार बंद कर दें अपनी कैंपेन्स मैन की, कि मैन दिखता ही नहीं है, बट मैन स्टोर्स पे दिखता है हमारा ऑनलाइन ऐड देख के। सो दैट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स नाउ सी सम FAQs। यहाँ पे काफी लोगों से पूछा जाता है कि बीइंग अ मीडिया प्लानर आपके पास लाजमी लाजमी ये सवाल आना स्टार्ट होते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेस्टिंग न्यू एड चैनल। अगर आप अपने किसी क्लाइंट को जाके बोलें कि यार लेट्स ट्राई आउट स्नैपचैट, let's do YouTube advertising, let's do a pre-roll, let's do a display campaign this month. So what is the benefit of testing a new ad channel? How will you tell your client? How will you convince your client to test a new ad channel? So you have to remember that ads deliver in two ways. When you are adding this new channel, whatever channel it is, going, is it either going to be reaching a new user
and attempting to convert them, that's your incremental reach to unique audiences. क्योंकि मेरी audiences यहाँ पे काफी ज्यादा overlap करती हैं. मेरी एक audience है जो Facebook पे भी है, वही user मेरा YouTube पे भी है. So is the new channel benefiting your net users? Incremental reach आपको दे रहा है, नहीं दे रहा? और दूसरा ये कि दैट चैनल इज गोइंग टू शेयर दैट यूजर विद अदर एड चैनल्स, इन विच केस अगर मेरा एक यूजर फेसबुक पे भी है और वही यूजर यूट्यूब पे भी है और मैंने यूट्यूब की कैंपेन प्लान को सजेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? मेरा कन्वर्जन रेट इंक्रीज होगा. यू कैन इंक्लूड दैट चैनल इन योर मीडिया मिक्स and that channel is going to be supporting conversion rate, because this new channel certainly going to be doing both of these things. You need to quantify both ways that this ad is performing. You need to know okay, which ad is performing, which channel is performing. That's going to give you the truest sense of how it works. So what is the formula? Channel incrementality plus media mix lift. ये आपकी दो चीजें हैं, ये आपने नोटिस करना है, ये आपने ऑब्जर्व करना है before suggesting a new ad channel to the client. Number two, formula for optimizing campaigns. Many people ask me कि क्या formula है campaigns को optimize करने का? How do you do optimization of your campaigns? ये एक बहुत jargon यूज करते हैं लोग मीडिया प्लानर्स के, यार आई एम ऑप्टिमाइजिंग द कैंपेन. एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं? सो फॉर मी देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस. मेकिंग एड कैंपेन्स मोर एफिशिएंट ऑब्वियसली कम डाउन टू अ सिंपल फॉर्मूला. ये पहले तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा इसका. परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज इक्वल्स टू डेटा क्वालिटी प्लस ऑप्टिमाइजेशन फ्रीक्वेंसी. नाउ इसका मतलब क्या है? When most people think about performance and optimization, they only think of the most granular optimizations that happen inside of ad platforms. Inside of ad platforms का मतलब अगर मैं Facebook पे campaigns optimize की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि इन प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशंस क्या हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं फेसबुक की, कि फेसबुक में मेरी कैंपेन चल रही है वो परफॉर्म नहीं कर रही, व्हाट आई विल डू इज आई हैव 3 or 4 मेथड्स. मैं जाकर अपनी टारगेटिंग चेंज कर दूंगा, मैं नई कैंपेन्स बना लूंगा, नए ऑब्जेक्टिव्स बना लूंगा, मैं बजट रीएलोकेट कर दूंगा और मैं क्रिएटिव चेंज कर दूंगा, मैं प्लेसमेंट्स ऑन ऑफ कर दूंगा. सो दिस इज द इन ऐप प्लेटफॉर्म की ऑप्टिमाइजेशन, कि मैं एक प्लेटफॉर्म की लिमिट में रह के क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ. So it's true that this is where a lot of performance can be gained. Okay, so नंबर ये सबसे बेसिक लेवल है आपका. So level 2 क्या होता है? Level 2 is delivery parameters, and this optimization is the least common one. You will make small adjustments to how ads are served across channels. This requires strong cross-channel measurements and insight. आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा चैनल किस एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, मेरे जो पाथ परचेज है वो कौन कौन से चैनल से होता हुआ गुजर रहा है. बिकॉज अगर आप बात करें सिर्फ गूगल एनालिटिक्स की, गूगल एनालिटिक्स आपको लास्ट टच या लास्ट क्लिक पे आपकी परचेज दिखा रहा होता है, वो भी पाथ आपको दिखा सकता है, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं दिखाता. प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ, फेसबुक की अगर मैं बात करूँ, फेसबुक मेरी कैंपेन के अगेंस्ट 100 परचेजेस दिखा सकता है, लेकिन वो सिर्फ लास्ट क्लिक पे एट्रीब्यूट कर रहा है मेरी कैंपेन्स को, या 7 डे व्यू पे या 7 डे क्लिक पे या 1 डे व्यू पे एट्रीब्यूट कर रहा है मेरी परचेजेस को. बट क्या पता मेरा कस्टमर, मेरा जो भी बायर है, वो 3 जगह पे मेरा ऐड देखने के बाद फेसबुक से उसने जाके परचेज, फेसबुक का ऐड उसे आखिरी नजर आया, उसने जाके परचेज कर दिया. तो किसने एट्रीब्यूट किया मेरी कैंपेन में? फेसबुक ने. बाकी 3 का भी रोल है मेरी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन की स्ट्रेंथ के अंदर. Level 3 क्या है? Level 3 is big picture media mix. This is where you test new channels and reallocate budgets based on long-term trends that are invisible month to month. अगर मैं आज आपको बोलूं कि यार आपने टिकटॉक पे इन्वेस्ट करना है, you should know कि टिकटॉक पे क्यों इन्वेस्ट करना है एंड उसके ट्रेंड्स आपने देखने हैं. सो स्टार्ट के अंदर आई वुड से कि आपको वो रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे, बट अल्टीमेटली इन द फ्यूचर अगर वो ग्रोथ की तरफ है प्लेटफॉर्म, सो यू विल स्टार्ट सीइंग दोज रिजल्ट्स. It's important that when you are trying to improve the results of any campaign, to think about improvement in terms of the marginal gains approach. ये बहुत ज्यादा एक important point है कि आपने, अब फिर उसके बाद खैर मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि यार मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ कि मेरी एक अच्छी कैंपेन परफॉर्म कर रही है, इसका बजट भी बढ़ा दो या ये कर दो, क्या करेंगे आप? यू आर प्रोबेबली नॉट गोना लुक एट योर कैंपेन एंड ऑप्टिमाइज 25% इन वन गो. 25% कैंपेन में आप चेंजेस नहीं कर सकते. अगर आपने कैंपेन में चेंजेस किए तो कैंपेन की लर्निंग खराब होती है. सो
आप करेंगे क्या, आप इसको मार्जिनल गेन्स अप्रोच से देखेंगे, दैट यू गोना ऑप्टिमाइज वन थिंग अबाउट फॉर लाइक 2-3%, देन यू गोना डायल इन समथिंग एल्स बाय 1 to 2% एंड अनदर थिंग बाय 1 to 3%. सो छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशंस कर करके आप उसका मीडिया परफॉर्मेंस गेज करना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू ऑप्टिमाइज कैंपेन. आप एकदम से जाके अगर मेरी कैंपेन ने 100 परचेज दिखा दिया और 10 करवा दिखा दिया, मैं जाकर उसका बजट डबल नहीं कर दूंगा, मैं उसको 50% से बजट नहीं बढ़ा सकता उसका, मेरी कैंपेन की लर्निंग खराब हो जाएगी. You have to find that efficiency point, and how we do it is by like 1 to 2% के changes करते हैं आप हर अपनी कैंपेन के अंदर. अच्छा, उसके बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि how do we scale campaigns. अच्छा, स्केलिंग और एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क है. तो मेरे पास अगर बजट है ना, तो मैं अगर बजट अपना सारा भी लगा दूं तो मेरा डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे. अगर मेरा फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से मेरा 100 सीपीए आ रहा है, अगर मैं उसे 2000 का बजट कर दूं तो मेरा सीपीए 100 नहीं रहेगा, मेरा सीपीए बढ़ सकता है 150-200 हो जाएगा. अल्टीमेटली मैं वहीं पे खड़ा हूँ, 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे पास. तो यू हैव टू फाइंड दैट एफिशिएंसी पॉइंट. इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊं कि there was an advertiser which was spending on connected TV, that is a ad format and ad network. Basically connected TV, जो TV screen आपके घरों के अंदर YouTube जिस पे आप देख रहे होते हैं, गाड़ियों के अंदर जो screens लगे हुए होते हैं, that is called connected TV, and reaching around 100K households every single month. So buy model attribution showed that connected TV by itself has almost zero conversions. मुझे CTV से zero conversions आती हैं, तो लेकिन अगर मैं सीटीवी को अपनी डिस्प्ले कैंपेन के साथ साइमल्टेनियसली चलाता हूँ ना, तो मुझे 10% का हायर कन्वर्जन रेट नजर आ रहा होता है. अगर मैं सीटीवी कैंपेन अपनी बंद कर दूंगा तो मेरा कन्वर्जन रेट 6% पे, बट अगर मैं सीटीवी कैंपेन अपनी ऑन रखता हूँ तो मेरा कन्वर्जन रेट 10% बेहतर होता है. सो दैट इज हाउ यू एनालाइज एंड दैट इज हाउ यू स्केल कैंपेन्स. The question that the advertiser or the analyst has to answer is, should I keep reaching 100K in CTV every month if I can't also reach them in display, if I can also reach them in display and native? Yes, you need to turn on that CTV campaign just to improve your conversion rate. Okay, so moving forward, एक और चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट के लोग बोलते हैं यार मुझे गूगल पे अपना कितना बजट रखें, हम फेसबुक पे अपना कितना बजट रखें, हम टिकटॉक पे कितना बजट रखें. फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अगर वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो कितना बजट स्प्लिट रखें. जिसके में से guys we'll ask queries in the end for like 5 minutes एक सेशन आंसर करेंगे, so you can wait for that. So how do we split the budget? So you have to be understanding if channel results are shared or incremental changes everything. So figuring out within your ad spend what's driving shared results and what's driving incremental results is going to be a much faster way to get performance insights. So this lets you allocate your budget more efficiently, obviously. So understanding that channel A, for example, delivers 80% of its attributed revenue as incremental. Incremental means more. And channel B delivers 10% of its revenue as incremental. You can make better choices on how to allocate your budget to drive growth, efficiency, and reach your goals. So if you're all doing is looking at Facebook, Google data and dashboards, you are only going to be able to evaluate each channel on the last touch or last click. तो आई वुड से कि इंक्रीमेंटल रीच, इंक्रीमेंटल कन्वर्जन्स को एनालाइज करना स्टार्ट करें आप. You might make a short-term choice to allocate dollars to Google or Facebook because it looks best on last dashboard. आपने देखा, आपने बोला यार Facebook मेरी अच्छी conversions आ रही हैं, आपने बजट वहाँ डाल दिया. But that's ignoring how these channels work together simultaneously. अगर मैं Google और Facebook चला रहा हूँ तो आप सारा बजट Facebook या आधे से ज़्यादा बजट Google को नहीं दे सकते. You have to make a split using the data and using these attributions and incremental conversions. You might also pull budget from a specific channel because it looked bad on the last touch, but it's actually the first touch in the media mix. अगर मेरा कोई ad Google पे पहली दफा देख रहा है और Facebook पे आखिरी दफा देख रहा है और Facebook उसे attribute कर रहा है, तो मेरा उसने Google पे पहली दफा देखा है ना, तो that is the supporting media. तो बजट अपना बहुत एफिशिएंटली आपने अपना स्केल करना होता है. आखिरी चीज अगर मैं बात करूं तो हाउ कैन यू इम्प्रूव योर रिपोर्टिंग. वी नीड टू सी मोर. क्लाइंट हमेशा ये कहते हैं यार वी नीड टू सी मोर, वी नीड टू सी मोर, और बताओ और क्या हो रहा है मेरे ब्रांड को लेके, मेरे मीडिया को लेके. सो व्हाट डू यू सी?
यहाँ पे दो चीजें, रिपोर्टिंग वर्सेस इनसाइट्स। रिपोर्टिंग क्या होती है? रिपोर्टिंग वो होती है कि लाइक मोस्ट मार्केटर्स डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस इनसाइट्स, दे ओनली रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन। जो डैशबोर्ड नंबर दिखा रहा है, सीपीएम इतना आ गया, सीटीआर इतना आ गया, आपका कन्वर्जन रेट इतना है, इतने लैंडिंग पेज व्यूज हैं, ये कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू आ रही है, ये कॉस्ट पर लीड आ रही है, तो दैट इज जस्ट द रिपोर्टिंग। क्रिएटिंग इनसाइट्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जितना बजट आप स्पेंड करेंगे, आप उसके अगेंस्ट आप देखें कि आपने कौन सी कैंपेन में क्या क्रिएटिव यूज किया है और कौन से चैनल्स आपने यूज किए हैं, किस तरीके की ऑडियंस यूज किए हैं। यू हैव टू बी लाइक प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट लुकिंग deep into the things. It's really easy to accidentally fall into the mistake of just stating observations, saying something like again CTR increased by 10%. मैंने एक कैंपेन चलाई, मेरा क्रिएटिव मैंने फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया, तो मैंने क्लाइंट को बोल दिया मेरा सीटीआर 10% से बढ़ गया। क्लाइंट पूछेगा भाई क्यों बढ़ गया मेरा क्रिएटिव 10% सीटीआर? सो व्हाट ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सीटीआर इंक्रीज बाय 10%। और इनसाइट क्या होगी? CTR increased by 10% because we started using a personalized creative. CTR increased by 10% because we increased the average frequency to 3.5. So that is how you give insights. Reporting is CTR increased by 10%. So that is very irrelevant for a client because client को आप उस client ने आपको hire ही इसीलिए किया कि because you are the professional. आप उसे रिपोर्टिंग के साथ साथ insights भी देंगे and actionable insights देंगे. So this is really important. और लास्टली अगर मैं बात करूं तो इन 2023 फेसबुक को दुनिया को के हो जाएगी 2023 एंड 2024 के अंदर। सो व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर दैट? फेसबुक और गूगल ने पहले कुकीज एंड पिक्सेल्स लॉन्च किए, उसके बाद फेसबुक ने कन्वर्जन एपीआई लॉन्च की अपनी। नाउ फेसबुक एंड गूगल आर गोइंग फॉर अ सर्वर साइड ट्रैकिंग। सर्वर साइड ट्रैकिंग होती क्या है? मोस्ट ब्रांड्स आर अभी करंटली एट दिस स्टेज आर स्टक एट कैपी। कैपी इज कन्वर्ज फेसबुक कन्वर्जन एपीआई. So cookies and pixels are the old way. iOS 14 didn't completely kill them, but killed about 50-60% of the data. Now brands are using KPI. CAPI. How it works is customer information, email address or home address is fed back into the Facebook to act as an identifier. CAPI gives Facebook back customer information to help with matching. यहाँ पे the problem is that Facebook targets users based on an internal user ID. फेसबुक टारगेट नहीं करता उनके होम एड्रेस से या आपके ईमेल एड्रेस से। कैपी के अंदर फेसबुक इंटरनल यूजर आईडी से टारगेट कर रहा होता है, मैच कर रहा होता है। कैपी हैज रियली हेल्प टू फुलफिल सम ऑफ द डेटा गैप्स, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट मैच। आपका अभी भी 40% डेटा लॉस होता है जो आपको एट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था। सो दैट्स अ लॉस। नाउ व्हाट यू कैन डू इज द ईमेल। एक और चीज होती है कि आपने जो ईमेल एड्रेस अपना स्टोर पे दिया है या कन्वर्जन के लिए दिया है या ई कॉमर्स से परचेज के लिए दिया है आपने, सो इज इट द सेम ईमेल एड्रेस जिससे आपने अपना फेसबुक बनाया था? आई गेस यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप फील होता है, क्योंकि फेसबुक आपने बहुत पहले बनाया था एंड आई बिलीव कि वो ईमेल एड्रेस आप अभी यूज भी नहीं करते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप जो ईमेल एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं अपने ब्रांड्स को, क्या वो ईमेल एड्रेसेस आप यूज कर रहे हैं अपने फेसबुक आईडी में? नहीं। सो 30-40% का डेटा इज स्टिल मिसिंग नाउ, जो अभी ब्लैक में वेन में। Facebook cannot see those transactions, so they cannot report on them. So when Google announced the death of third-party cookies, they recommended that advertisers adopt server-side tracking to replace third-party cookies. SST करता क्या है? SST tracks web activity on the web host server outside of the user's browser. SST is special because it allows you to directly capture user platform IDs. SST आपकी user platform ID capture कर लेती है, जो आपको मैप करवाएगी Facebook conversion API से भी और Google की server side tracking से भी. The best way to get accurate reporting and better algorithmic performance out of Facebook or Google is to feed them back their own platform ID, क्योंकि platform ID से वो मैच करते हैं, तो आप अगर उन्हें वही दोगे तो वो ज़्यादा easily मैच कर पाएंगे. That way you get 100% match rate. So server side tracking के दो मेन बेनिफिट्स भी हैं. नंबर वन इज बेटर रिपोर्टिंग, बेटर एट्रीब्यूशन, 100% मैच रेट होता है यहाँ पे, तो आपकी कैंपेन आप एफिशिएंटली जज कर सकते हो. नंबर टू इज इम्प्रूव्ड एल्गोरिथमिक परफॉर्मेंस. So that is the thing you should start implementing for your brands and clients. I guess, yeah. So that's all for today. दूसरी ये चीज होगी, मैं आपके मतलब लास्टली
I would say दैट अपने ब्रांड्स अपनी कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा जार्गन्स इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, अपने ट्रेंड्स फॉलो करना स्टार्ट करें। जो आपके नंबर्स एंड मेट्रिक्स होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। अगर क्लाइंट आपसे पूछ रहा है ना यार मेरी कैंपेन में सीपीएम क्या आ रहा है, तो आप डैशबोर्ड देख के नहीं बताओगे सीपीएम क्या आ रहा है। यू शुड नो कि आपका सीपीएम क्या आ रहा है। सो बिकॉज अगर वो डैशबोर्ड देखना ही होगा तो क्लाइंट खुद भी देख सकता है। सो आई वुड से कि स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स, छोटी छोटी चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। मीडिया इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड और बहुत छोटी है। सो आई गेस यू शुड बी मोर like proactive and shine out in the industry, and I believe everyone can learn media because ये सब एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म्स हैं, सारी चीजें गिवन है यहाँ पे। एंड आई वुड से कि स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। आपके पास डैशबोर्ड एक्सेस है, आपके पास गूगल एनालिटिक्स है, घुसे आप उसके अंदर, चीज़ों के अंदर आप रीड करना स्टार्ट करें। यार अगर ये चीज़ हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, क्यों हो रही है। हर कैंपेन के अंदर आप मेट्रिक्स में जाएं एंड उसको जज करना स्टार्ट करें, ऑडियंसेस के अंदर आप जाएं, स्टार्ट करें उसे। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर टुडे, and thank you all for attending this session, as this is the first Learn with Masterclass, and I would like you all to please fill out the feedback form and let me know if you want me to continue these sessions further, जिसके अंदर मैं आपको प्लेटफॉर्म वाइज इम्प्लीमेंटेशन बताऊं चीज़ों की, एंड प्लेटफॉर्म वाइज बताऊं कि हाउ यू कैन एक्चुअली गो अबाउट दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल तो होती हैं इंटरनेट पे, बट पीपल डू नॉट गेट इट। थोड़ी सा टेक्निकलिटीज भी आ जाती हैं, तो यू नीड टू नो कि किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करना है। सो प्लीज लेट मी नो इफ आई शुड कंटिन्यू दिस और नॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Guys, it would be great if you could take a minute and fill out the feedback form in the chat.